Dear students, welcome to virtual classroom of Municipal Corporation of Greater Mumbai. I am Sri Kumar. The class is for 9th standard students. Subject is mathematics. Let me begin the class. Dear students, this class is again on ratio and proportions, quite a big lesson. And you already came to know the concept of ratio, what is meant by ratio, what is meant by proportion, the direct proportion, inverse proportion or direct variation, inverse variation are known to you. The second video was about comparison of ratios. In that you studied how can we compare ratios if it is A upon B and C upon D, to compare that which one is greater, which one's value is more. We found that a cross multiplication is the simplest way of understanding the value of the ratio or to compare the ratio. अगर आप लोग लास्ट 2 वीडियो देखा नहीं तो वो पहले देख लीजिए. I will be giving the link of that below, or you can get in the same channel. Now I will be moving ahead according to your textbook. I am always depending on your textbook, क्योंकि आपको बार बार टेक्स्ट देखे तो ही ये सब अपने माइंड में बैठेगा और बार बार करने से ही एक्सपर्ट बनेगा. सो देयर इज़ नो शॉर्टकट. तो आपको मुझे ये बताना है कि अभी मैं वापस एक कंसेप्ट क्लियर करके दूंगा, आप एग्जाम्पल में वो कंसेप्ट कैसे अप्लाई किया है देखेंगे. देन यू विल ट्राई योर सेल्फ टू डू द एक्सरसाइज. इफ यू फाउंड एनी पर्टिकुलर सम डिफिकल्ट, यू विल गो बैक टू द एग्जाम्पल, गो बैक टू द वीडियो. एंड फिर भी नहीं होते तो ही आप रेडीमेड आंसर के लिए जाएगा. देन रेडीमेड आंसर यू विल अंडरस्टैंड. क्लोज द गाइड और क्लोज द स्क्रीन ऑफ रेडीमेड आंसर, एनीथिंग वट एवर यू आर ऑब्जर्विंग. देन डू इट अगेन, डू योरसेल्फ. ये स्लोगन में हर वीडियो में 10 बार बोलते रहेंगे, क्योंकि मैथ्स करते करते सीखते हैं, लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं कर सकते. सो लेट मी मूव ऑन टू द न्यू कंसेप्ट और न्यू आइडिया वट एवर इज देयर इन दिस syllabus hereafter. That let me get into that. Let me check what is it actually. It is an operation on equal ratios. जैसे कि आपको equal ratios क्या है अभी concept है. Equal ratios क्या होता है? For example, from the information you have already gathered in the last video, we know that equal ratios if comes like if I write in the textual format A upon B and C upon D, if they are equal ratios, we know that if you cross multiply them, you will get equal. That means if A upon B is equal to C upon D, if there is an if, then naturally this particular one, if you do this, you will be getting AD and will be equal to BC. This is what is the fundamental of checking or comparing ratios. Now once if it is equal ratio, there are a lot of specialities and peculiarities. That is what we are going to understand in this video. For example, if a situation is there where the ratios are equal, this is after 4.2 exercise. 4.2 तक आपको अच्छा से करके आना है. एक्सरसाइज का हर एक सम बिना देख के करने को आना मांगते हैं. उसके लिए आप फर्स्ट खुद ट्राई करेंगे, देन एग्जाम्पल देख के ट्राई करेंगे, फिर आपका जो भी सोर्स है उससे ट्राई करेंगे. दैट शुड बी द मेथड. नाउ सपोज दैट इफ A अपॉन बी एंड सी अपॉन, जो हमेशा ए अपॉन बी सी अपॉन डी बोले तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन का भी चांस है. ज़रा रियलिज्म में जाता हूँ, रियलिस्टिक नंबर ले लेता हूँ. क्या नंबर ले लूँ? लेट मी टेक सम सिंपल नंबर्स लाइक 3 अपॉन 4. ये आपका फेवरेट रेशियो है. If I multiply both numerator and denominator with same number, you know that a value won't change. I am going to multiply with 2 in this case. That will become 2 3s are 6. 2 4s are 8. We are 100% sure that these are equal ratios, because we multiplied both numerator and denominator with the same number. So हमको कुछ doubt ही नहीं है. Now if I do an operation like this, this is the ratio given. I am writing this ratio in the inverted form.
What is inverted form? Instead of 3 upon 4, I am writing 4 upon 3, and instead of 6 upon 8, I am writing 8 upon 6, and I am going to do cross multiplication. You know what is cross multiplication? And I will be getting 24 equal to 24. That means even if you invert, the ratio won't change. So if A upon B is equal to C upon D, we can easily say that by our experience in this particular matter now happened, B upon A is also equal to D upon C. We have inverted this like this. This method sometime will become useful for us in solving the sum, and or this property we have named as invertendo. A Latin term है, बोलने में कुछ मजा भी आता है. Invertendo. That means even if you invert the equal ratios, the value of the ratio is maintained. This is one thing you have to understand in this video first. And there are certain more such situation which I will be going little fast, because आपको समय में हम ये invert करके देखा, तो हम थोड़ा दूसरा कुछ करके देखेंगे. Okay, we will try to do something else. What can be it? Now the same ratio I will take the same example every time. The example was 3 upon 4 and 6 upon 8, right? 3 upon 4 and 6 upon 8. We know that these two are equal ratios. हमको मालूम है, हमने बनाया, तो इसलिए हमको मालूम है by multiplying with 2 we made this. Last time we inverted. This time we will do something different. We will simply alter it. What is by alter it? I will write numerator upon numerator. That is altering. 4 upon 8. That means this upon this upon this किया. Equal to होता है तो क्या होगा? The multiplication again should be equal. 24 equal to 24. Which multiplication? Cross multiplication, जो हम check करने के लिए use करते हैं. This way, if the ratios are equal, we have altered, changed the ratio in such a way that the numerator upon numerator हो गया. 3 upon 6 कर दिया, देखो. So we call this particular method as another word, what is called alternando. ये word important है क्योंकि आपको लिखना है कौन सा, कौन सा ये यूज किया, alternando. मैथ्स इसलिए करके पढ़ना है, लिख के पढ़ना है. Alternando. This is the technique used. We will think about another situation. What is that situation? Again we will take that same example. 3 upon 4 is equal to 6 upon 8. And we are trying to, so if I am writing this in A upon B format, A upon B is equal to C upon D, ये alternando में क्या होगा? आपको ऐसा लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा? A upon C, A upon C, you will be writing it like that, is equal to, that means this upon this, is equal to B upon D. ऐसा लिखना पड़ेगा. This property is named as alternando. Now moving to another kind of property, where I have to, now जगह कम हो गया नहीं तो otherwise I have to go to another slide. No problem. Slide is there enough, but it is better remove this. I will have the heading here clear cut. Chalo. So two different kinds or different method we found. Now we are going ahead with the same ratio what we already used. It is 3 upon 4 equal to 6 upon 8. मैं ऐसे ही लिया पहले से. So we are doing something. If we do it in this way, 3 plus 4 upon 4 equal to 6 plus 8 upon 8.
what we are doing, we are making it component format. This 4 we added here, this 8 we added here and made an equation. Let us find out what happened. 3 plus 4 is equal to 7 upon 4 and 6 plus 8 is equal to 14 upon 8, right? Correct or not? Oh yes. Now we have to check whether they are equal or not. 7 8s are 56 and 14 4s are 56. Here also the ratios are equal. This technique is named as componento. This is named as componento. तो आपके मन में अभी आया होगा ये कंपोनेंट है तो कैसा लिखेंगे, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d. अभी क्या हो गया, देन इन दैट केस a प्लस b अपॉन d इज इक्वल टू c प्लस, ओ सॉरी इधर b आएगा, c प्लस d अपॉन d. करेक्ट. सो वी गॉट अनदर, सॉरी another पूरा जाएगा क्या, हाँ जा गया, another relationship. Understood? We named it as component. And if that happens, if it is 3 plus 4 की जगह पे अगर मैंने 3 minus 4 upon 4 and 6 minus 8 upon 8 लिखे तो क्या होगा, 3 minus 4 is equal to minus 1, this will become 4, and 6 minus 8 is equal to minus 2, and this will become 8, and if I cross multiply it becomes minus 8 equal to minus 8. इधर भी ratio maintain किया. This way if we are writing, it is named as dividendo. This relationship is named as dividendo. Dividendo is showing difference, componento is showing addition. कंपोनेंटो में एडिशन है, डिविडेंडो में डिविजन है, डिफरेंस है. सो वी हैव 4 टाइप्स नाउ. फर्स्ट वन वाज सिंपली वी इन्वर्ट किया था जिसको हमने इन्वर्टेंडो नाम दिया था. देन वी हैड अल्टरनेंटो, वेयर वी न्यूमरेटर को अल्टर किया था. Then we had this componento. These are all different. Then now we had dividendo. These are the main 4 categories. Is there any other possibility when we think componento, dividendo, alternando, invertendo? There is one more category possible. That is, it is like this. I will show you. It is like this. Let me remove this. ये सब माउस का खेल है. चलो remove. We are thinking about another possibility. The possibility is combining both componento and dividendo. वो क्या होता है? Again we have to go to that particular number which we took as an example, 3 upon 4 equal to 6 upon 8. So what we will do, in one case we will do addition and another case we will do like this. 3 plus 4 जो हम component में लिखा था, correct? 3 plus 4 and 3 minus 4 जो dividend में लिखा था. तो 6 plus 8 upon 6 minus 8 करके देखता हूँ. 7 and 3 minus 4 is equal to minus 1. Here 6 plus 8 is equal to 14 and 6 minus 8 is equal to minus 2. Here also when we multiply we are getting minus 14 both sides. So this particular category is specially named as a combination of both and has named as componento dividendo. That means रेशियो इक्वल है तो बहुत कुछ खेल सकते हैं हम. देखो algebra is a set of tools, I would say. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टूल्स मिलते हैं algebra में. That's a
ज्योमेट्री कुछ लॉजिकली आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और प्रूव कर रहे हैं. Algebra will be helping us to use those tools to prove, tools to argue, tools to solve the situation. So both are having different approach, that you should remember. So you learned the fifth one, what is called componendo dividendo, which I can write like this: a upon b is equal to c upon d. Then you can write a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d. That is what is componendo dividendo. पहले बार सुनने के टाइम में क्या है डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो बहुत मुश्किल काम लगेगा. बाद में कुछ जैसे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले मुश्किल होता था, फिर मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ना, इट वाज ए बिग टास्क. डिवीजन वाज ए टास्क, सब्ट्रैक्शन वाज ए बिग टास्क. वो सब कुछ नहीं है अभी. टेकिंग आउट, ब्रिंगिंग आउट परसेंटेज इज नॉट ए प्रॉब्लम, डेसिमल नंबर्स इज नॉट ए प्रॉब्लम, राइट? And fraction is not a problem, addition of fraction is not a problem, making the denominator same is not a problem. So this also will become no problem tomorrow if you do. That's what I want to say. Okay, I will try to get more about this further from the textbook. Let me see what is there to provide you. Before that, let me see what is. Okay, this is what you actually got now, and this is a caption from your textbook. मैंने नहीं बनाया. Fundamental, हमेशा fundamental पक्का करो. इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो एंड कंपोनेंडो डिविडेंडो का जो फॉर्मेशन आपको क्लियर है, so then it will be very much helpful to you to apply this in situation comes. Here is an example, a situation. A upon b is equal to 5 upon 3, then find the ratio of a plus 7b upon 7p. ये देखने से ही आपको कुछ समझ में आ रहा है. एक मेथड है, ये आपका टेक्स्ट बुक है. a upon b is equal to c upon a upon b is equal to 5 upon 3 दिया गया है. In that case, we know that, what we know, we directly used alternando, alter किया, alternando. A upon 5 is equal to b upon 3, ये भी हमको मालूम. After writing this and after cross multiplication we can, and we know that it is equal to k लिख सकते हैं, any number, any alphabetic. That means a upon b is equal to k, the same value. B upon 3 is also is equal to k, same value. That means you can simply say a upon b, a upon 5. A is equal to 5k, b is equal to 3k. ऐसा लिख सकता है. Then all these things became in terms of k. अब इसके अंदर a भी नहीं है, k है. सब कुछ k हो गए तो फिर आपका काम इजी हो गया. You solved it. What we used? Just now learned alternando. Look at the other method. Same question. And it is given that a is equal to, a upon b is equal to 5 upon 3. And we are asked to find the value of this, where b is increased, I would say. And we calculated in terms of k also. And a upon b is equal to 5 upon 3 when it is given. A upon 7b where it is given. Here it is. 7b means what happened? We multiplied with 7. So here also we will multiply with 7. It will become 21. And by using componendo में तो याद आना है एडिशन. देखो अपना क्वेश्चन का फॉर्मेट में आ गया. Understood? What is given over here is a multiplication with 7. That's what we did. We converted that into in that format. What is the meaning of this actually? A upon 7b and 7b upon 7b. Right? This is the meaning of it. So we made this side a upon 7b, then we made the same equivalent to the other side. When we made equivalent to the other side, we could use the new tool, new technique. Just now we learned. Understood? Going little fast to the next page. Next example, if any. Let me see what is this. Board मिटाने को भूल गया.
मिटा दिया. चलो another example, a upon b is equal to 7 upon 4 दिया है. Same way, and 5a minus b upon b. ये देखो तो मुझे तुरंत ये याद आएगा. And I will convert this a into 5a like this. This method 2 is according to me, सब अपना अपना ब्रेन के ऊपर है. वो 5a में कन्वर्ट किया तो मुझे प्रॉब्लम इधर सॉल्व हो गया. Here we will evaluate what can be the substitution for a, substitution for b बनाएंगे. a upon 7 b upon 4 अपना अल्टरनेटिव अप्लाई किया पहले के जैसा. एक वैल्यू से इक्वेट किया, k की जगह पे m डाल दिया एंड वन टर्म्स में लाया एंड सॉल्व किया. दोनों में इसको मैं फास्ट जा रहा हूँ मुझे मालूम है, लेकिन फास्ट जाना ही है मुझे, दूसरा रास्ता नहीं है. And this is an example from textbook, so you can look at it. And what I am trying to make you understand, just now learned alternando, componendo, dividendo सब कैसे apply कर रहे हैं ये दिखा रहा हूँ आपको. How we are applying it in situations which come across in our mathematics studies. चलो let us go ahead. Here is another example. Again a upon b, and here it is an addition and subtraction. तुरंत मुझे addition subtraction देखे तो ये याद आएगा. What is it? Componendo, dividendo. I will tell you. मुझे क्या याद आया? ये देखो, ये प्लस ये माइनस देखे तो मुझे ये याद आ गया. तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसको ये फॉर्मेट में एक any one of that, even if you convert b will do, here instead of that 2b बनाने का कोशिश किया, no problem, anything, multiply both side by 1 upon 2, तो इसलिए वो convert होता है. and 1 upon 2 से multiply किए तो you got 2b here, which is one of the component here, and applied component to dividendo, and all became according to the question का ही आंसर मिल गया डायरेक्ट. ये इसी मेथड है, but the other method is equating. a upon b and 7 upon 3 is given. a is equal to a upon b. बार बार वो एक स्टेप जाने का ज़रूरत नहीं है. we can say simply that a is equal to 7m, b is equal to 3m, and coming in terms of just like before, a upon b is equal to 7 upon 3 is equal to m समझने का. Okay, so that way we can solve it. There also you will get the answer. Understood? So this method is direct application of what we learnt now. The other case we will be going by another stepwise method where you will equate with a is equal to bm, or 7 upon 3 is also equated with 7 upon 3 is both are constants, and you can directly substitute also. Okay, so that is what is one method, the other one is 2. Chalo, let me remove this. These are all examples from your textbook. आपको कितना टाइम लेना है ले लो, कुछ जल्दीबाजी नहीं है. वीडियो भी पॉज कर सकते हैं, अभी बात का बाद में पढ़ेंगे वो भी चलेगा, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. और आपका 9th स्टैंडर्ड का बुक ही सबसे टफ है अलजेब्रा में भी. सो आपको 9th स्टैंडर्ड थोड़ा रुक जाएगा गाड़ी, लेकिन जाएगा. Here is another application where we are using again same method. Alternando is used. In the first instance alternando का मदद लिया, रहेगा. alternando का मदद करने के बाद अपना स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है. In this where we will be having this method quite easy. a upon 3 is equal to b upon 2 is given, right, and उसके बाद 5a plus 3b and 7a minus 2b is given. दो it appears as if a component और dividendo के फॉर्मेट में ला सकते हैं, but it cannot be. That you will come to know when you use the method 2. तो with the substitution method में जाना पड़ता है. Now here what we did was we have divided the terms 5a plus 3b and 7a minus 2b with b, because by keeping a and b unknown it is a tough job over here. So b से divide करने से we are doing the division with b here.
and it became equal to 5a upon b plus 3 and 7a b upon minus 2. ये मिलने के बाद we can slowly substitute that, because we have already equated here using alternative. We will substitute the value of a and b here. a and b की जगह पे इसका value substitute करेंगे, which we are getting from here, and आपका ये method आप I think 8th standard में पढ़ा था. What you are learning now is this. ये फॉर्मेट में लाने को सीख रहे हैं, बाकी तो आपका अलजेब्रा का एक्सपीरियंस है. नाउ हियर दिस मेथड, अर्लियर मेथड की जो टी से इक्वेट किया, टी से इक्वेट करने के बाद वी गॉट इन टर्म्स ऑफ टी, एंड व्हेन इट एवरीथिंग बिकम्स इन टर्म्स ऑफ टी, वी विल गेट इन आंसर फ्रॉम दैट विच विल बी इक्वल टू दिस इक्वेशन. Earlier this method was on the left side, this method was on the right side. वो टेक्स्ट बुक में मेथड कौन सा भी चलेगा आपको, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम. स्पेंड टाइम, मुझे आपको ये बताना है, ये मुझे अभी जल्दी समझना है, इसके बाद खेलने को जाना है, मेरे फ्रेंड्स लोग आने वाला है, अभी गए नहीं तो मेरा फ्रेंडशिप टूट जाएगा, तो फ्रेंडशिप रखने जाएगा तो मैच टूट जाएगा. तो कौन सा चाहिए आपको, डिसीजन लेना है. ओके, हियर इज द fifth example. The fifth example is again x upon y is equal to 4 upon 5, and the value of the ratio is 4x minus 5 and 4x plus 5. Almost same. Here by multiplying both sides with by 4, we are trying to get this. We are trying to get this 4x. 4x we got. That is a technique. Algebra is full of tools. Multiply by 4 will solve the situation to like this. 4x अपने हाथ में आ जाता है, 4x and y के terms में हमको लिखना है, and if 1 became common on one side, we are getting relieved. We know about the technique of solving it thereafter. We have studied about linear equation in two variable and all, and we have studied component of dividend now. This can be it can be applied here, but means component of dividend you will be adding here, you will be subtracting the same from here. Here you will be adding here, subtracting 5 in the denominator, and the issue solved. आपका क्लासरूम में अगर बोर्ड में करता है तो बार बार देखने नहीं मिलता है, ये इधर भी देखने मिलेगा और टेक्स्ट बुक में भी. So that's the benefit of online mechanism. But you should be ready to follow it one after another. Okay, as it is example, I did go fast, I know, and most of the techniques are learned before. Only component of dividend, alternate, all this how and when it is applied. This is what you studied. Example 6 is also there, where we are again applying component of dividend, same method, and multiplying with 3. Why 3? Because it is 3x square here. Earlier 4 because it was 4x over there. इतना ही टेक्निक है, बाकी तो आपका common sense of algebra will help you to solve. And there are certain situations where you will be applying this to solve situation. Applying means same equations will be given, and you will be applying the common sense of equal ratios. Multiplying by 2, you can understand again the same method is multiply to both sides in order to get some square over here. 3x square 5x multiplying, we are getting double of it, and we can using dividend. देखो थर्ड स्टेप में डिविडेंड अप्लाई किया, डिविडेंड अप्लाई करने से सब्ट्रैक्शन आ गया एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. सो सब बहुत कमाल की नॉलेज, इक्वल रेशियोज को ऐसा रिलेशनशिप है. अनदर एग्जांपल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड फर्स्ट लाइन में ही, और दिखने से ही मालूम पड़ा ये कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो का गेल है. क्यों? प्लस माइनस इधर है, प्लस माइनस इधर भी है. तो अप्लाइंग दैट कंसेप्ट we could solve it so quickly. बाकी क्या है, स्क्वायरिंग both side of the equation. ये तो 6th standard का application है, and the solution is obtained. So my dear student, the chapter is this video is mainly about how to use this particular relationship of equal ratios in solving certain specific and certain difficult situation in mathematics, not in simply 9th standard exam में mark लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हम लोग. We are
developing a technique of solving different situations in mathematics and what tool can be used. गाड़ी कभी रास्ते में खराब हो गई तो क्या करते हैं, हमको रिपेयर करना है तो हमेशा हम एक ही टूल लेता है क्या, कभी स्पैनर लेगा, कभी स्क्रू ड्राइवर लेगा, कभी हम क्या बोलते हैं हैमर भी लेंगे. इन सम सिचुएशन सम वायर्स विल बी रिक्वायर्ड, सम टाइम वी विल बी इन ए सिचुएशन टू टेक सम pliers and different things we do at different time because we are having different tools in our vehicle. अपने कार में बहुत सारे टूल्स है, अलजेब्रा में बहुत सारे टूल्स है सिचुएशन डील करने के लिए. वो कैसे टूल्स, अभी किसको आएगा वो टूल्स. अपना गाड़ी में वो टूल्स है, उसका वो स्पैनर का साइज 11 mm वाला इधर अप्लाई हो जाएगा, उनको मालूम है, वो बार बार यूज करने वाले को, सबको नहीं मालूम होगा. द सेम सिचुएशन, अगर आपको कंपोनेंटो, डिविडेंडो, अल्टरनेंटो, इन्वर्टेंडो अप्लाई करना है, आप उसका प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस कैसे होगा, पहले समझना है. समझ में कैसे आएगा, वीडियो से, टेक्स्ट बुक से, एग्जाम्पल से. दिस आई विल रिपीट इन एवरी वीडियो एंड यू विल स्पेंड टाइम. स्पेंड टाइम. अगर आपको बोलेंगे किसी को साइकिल चलाने को सिखाओ, आप बुक से नहीं सिखा सकते, साइकिल में बिठा के. मैथ्स में भी वैसा ही है. यू विल सिट इन दैट चेयर ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स. गिर जाएगा साइकिल से, लेकिन वापस सीधा करके इस तरफ गिर जाएगा, तीसरे बार सीधा चलेगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम एडवाइसिंग आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स. देयर इज नो शॉर्टकट. You should spend time, you should spend paper, you should spend ink, you should love it, you should love getting the solution. Understood? Thank you very much. Now click on the subscription button below to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.